The Solitary Reaper is a poem by the English poet William Wordsworth. The poem was inspired by the poet's trip to Scotland in 1803 with his sister Dorothy Wordsworth. It was first published in 1807. In the poem, the speaker tries and fails to describe the song he heard a young woman singing as she cuts grain in a Scottish field. The speaker does not understand the song and he cannot tell what it was about. क्योंकि पोइट को उस लड़की की लैंग्वेज नहीं आती है तो वो उसके बारे में गैस करता है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन ही इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू डिसाइड कि इस उसके सॉन्ग का क्या मीनिंग है, because he was unable to find the language to describe its beauty. He finds that the traditional poetic metaphors for a beautiful song fail him. The poem thus calls implicitly for a new kind of poetry, one that is better able to approximate and describe the pure, unpretentious beauty of the reaper's song. कि वो कहता है कि although that I am unable to understand the real meaning of the song of the reaper, but still this song is very beautiful and quite attractive when I heard it, and that music or the tune of the song is permanently stamped on my heart. As he says that look at her alone in the field, that Scottish girl by herself over there. She is cutting the grain and singing to herself. Stop and listen to her or walk on quietly. She cuts and gathers the grains and sings a sad song. Listen, the deep valley is overflowing with her music, because according to poet, this song, according to tune, could be a sad song, a song of some deep sorrow. No nightingale ever sang more soothing notes to tired groups of travelers as they rested at an oasis in the Arabian desert. The cuckoo bird never sang with such an affecting voice in the spring, breaking the ocean's silence around the Scottish Isles. तो उसके ख्याल में किसी भी नाइटिंगेल ने, किसी भी कुकू बर्ड के नज़दीक ऐसी कोई ब्यूटीफुल वॉइस नहीं थी. उनके सॉन्ग्स जो थे वो इतने डिलाइटफुल नहीं थे जितना ये सॉन्ग उसके लिए है. Won't anyone tell me what her song is about? क्योंकि वहाँ और कोई नहीं है. She is all alone in the field, and on the other side is poet himself. So there is no one to tell him the meaning of the song. Maybe she sings so sadly for old tragedies and ancient battles, or maybe the song is humbler about everyday things, the pains and sorrows that everyone endures. क्योंकि उसकी जो टोन है, उसकी जो ट्यून है, that is very sad sort of. Whatever she was singing about, and पे वो यही कहते हैं, the young woman sang as though her song would never end. It was eternal in his mind. I saw her singing while she worked, bending over to cut the wheat with a sickle. I listened to her without moving, and as I walked on up a hill, I carried her music in my heart, and I still do, long after I stopped hearing it. So this was a synopsis of the poem. Now let's come to the themes of the poem. When we talk about the theme of the poem and the Solitary Reaper, this poem is about music. The song, a Scottish girl sings as she cuts hay with a sickle. Though the poem's narrator cannot understand what the girl is actually singing about, the girl's song sticks with him, its melancholy beauty echoing in his head long after its sound has faded. कि उसके माइंड में, उसके दिल में जो म्यूज़िक की ब्यूटी है वो एटर्नल हो गई है, एटर्निटी से बिलोंग करती है, बिकॉज इट इज़ नेवर गोइंग टू फेड.
fade away or it is not going to end at any cost. जो beauty उसने उस वक्त महसूस की थी, he is still feeling that beauty, and he still remembers the charm of the beauty that was created by listening this beautiful song, though he never understood a single word of that language. And in this way, the poem suggests the ability of art to transcend cultural boundaries and even language itself. Art in the poem can communicate feeling or emotions even in the absence of the concrete understanding. एक W.B. Yeats की एक पोएम, जॉन कीट्स की एक पोएम है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न. उसका थीम भी यही है कि उसमें आर्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, आर्ट एटर्नल होता है, और वो जो फीलिंग्स और इमोशंस और जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहा होता है वो रीडर को एजेस के बाद भी वो अपना जो चार्म है वो कन्वे कर देता है. जबकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं दे आर मॉर्टल, सारे ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, लोग ख़त्म हो जाते हैं, इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, सिचुएशंस ख़त्म हो जाती हैं, लव ख़त्म हो जाती है, हेटेड ख़त्म हो जाती है. लेकिन आर्ट में जो चीज़ देने की कोशिश की जाती है वो आर्ट में इटर्निटी की तरफ चली जाती है. तो इस पोएम का बेसिक थीम यही है कि वो जो पोएम जो सॉन्ग उसने सुना था उसका चार्म अभी तक उसके दिल में है. And still at the same time the poem also communicates a bit of uncertainty about whether poetry itself can offer its connection in the way that music can. कि poetry क्या music से ज़्यादा powerful है in order to convey the message of the person who is creating it. The speaker focuses on the transfixing power of the reaper's mysterious song कि वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है इमेजिन करते हुए, चीज़ों को फील करते हुए. तो उसकी जो साउंड है, जो उसकी ब्यूटी है, सॉन्ग की ब्यूटी, उसने उसको एक ट्रांसफिक्सिंग पावर दी है जिसकी वजह से वो चीज़ों को एक और ही एंगल से देख रहा है. ही डिस्क्राइब्स हर सॉन्ग इन एन एलिगेंट एंड स्लाइटली delightful terms. It fills the valley with sound and she sings as if her song could have no ending. He also invites the reader to share in his wonder and pleasure, asking them to stop here and listen. वो हमें भी दावत दे रहा है कि हम चाहें तो उसका म्यूज़िक जो है वो सुनते रहें या फिर वहाँ से खामोशी से चले जाएं. Yet he cannot actually understand the reaper's song and even cries out, "Will no one tell me what she sings?" He is either too far away to make out the words, or more likely the reaper is singing in Scots, जो लैंग्वेज है स्कॉटलैंड की, जो पहाड़ी ज़बान है उस एरिया की, which is closely related to but different from English. He wonders whether she is singing about some ancient epic battles or simply the humble and familiar sorrows of everyday life. In either case, the speaker draws pleasure from the girl's song despite not knowing its specifics. कि वो बहरहाल उस चीज़ को enjoy कर रहा है और meaning derive करने की कोशिश कर रहा है, although he doesn't understand. For the speaker, the power of Reaper's song transcends cultural and linguistic divisions, allowing the speaker to feel connected to this solitary highland lass. ठीक है कि उसके नज़दीक लैंग्वेज की जो बैरियर्स हैं और कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं. शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हर सेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ फिनोमेना. इसमें मतलब इसमें लैंग्वेज और ज़बान की आप कहने के वे ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं उनसे वो आज़ाद है. यहाँ पे इसका एक और थीम भी बनता है कि जैसे पोइट ने पोइट्री की पावर की बात की है, तो पोइट्री की पावर जो है वो सिर्फ वर्ड्स पे नहीं होती है बल्कि उसकी रिदम पे भी होती है. कि जिस तरह सॉन्ग की जो पावर है उसने कहा है कि इट इज़ इमॉर्टल एंड इट इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू जस्ट पोइट्री. तो वो कहता है कि पोइट्री की भी जो पावर है वो असल में उसके रिदम में होती है. एंड इट इज़ लेस इन इट्स कंटेंट एंड मोर इन इट्स रिदम.
इस म्यूज़िक द शेयर प्लेयर ऑफ म्यूज़िकल लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कनेक्शन कि जैसे ही वो उसकी म्यूज़िकलिटी डेवलप होती है, इट कन्वेज अ मैसेज, इट स्टार्ट्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन द पोएट एंड द रीडर. And still, despite the power of the Reaper's song, which creates a connection across linguistic and cultural boundaries, the speaker spends much of the poem trying and failing to find the language to describe her song. The poem thus stresses the distinction between the speaker and the girl, and between poetry and the song. Her song and her life remains beyond what this poem of the poet can represent. Indeed, it is possible to read the poem as being about the failure of poetry, or specifically of certain poetic language, to adequately describe this pure, unpretentious music. In this way, the poem implicitly calls for a new kind of poetry that could better capture the reaper's song. कि दोनों तरह से इसके जो थीम है वो वाज़ेह हो रहा है. Wordsworth was one of the leading figures of English Romanticism. It was an artistic and intellectual movement that swept across Europe at the end of the 18th century, in contrast to the Enlightenment with its emphasis on scientific reason. Romanticism drew on feelings often provoked by the solitary contemplation of nature. Wordsworth, for instance, described poetry as the spontaneous overflow of feelings, powerful feelings recollected in tranquility. In other words, poetry is a calm recollection of intense emotions. और इस पोएम में भी ये उस काम रिकलेक्शन की बात हो रही है कि उसने जाते जाते एक सॉन्ग सुना, और उस सॉन्ग की जो इमोशंस और उससे जो उसको फीलिंग्स अराउज हुई, वो उस अभी तक उसको वो हॉन्ट करती हैं, या अभी तक उसके माइंड में वो नक्श है. The Solitary Reaper is a clear example of Wordsworthian romanticism, since its speaker reflects on a powerful experience of nature from tranquil distance. Though he does not know what she is singing about, the speaker seems to ascribe to the reaper a sort of virtuousness and purity on the basis of her simpler existence and relative proximity to nature. जो उसका वर्ड्सवर्थ की थियरी है अबाउट पोइट्री, ये उसकी जो पोइम है एग्जैक्टली उसी थियरी को रिफ्लेक्ट कर रही है, और उसमें वो इसी पे ही उसका फोकस रहता है. क्योंकि वर्ड्सवर्थ कहता है कि उसकी जो पोइट्री है, अकॉर्डिंग टू हिम, पोइट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से लिया जाता है. तो यहाँ पे इस पोइम में रीपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नेचुरल एक ऑब्जेक्ट को. The reaper is implied to be closer to a natural existence than the speaker. In the terms of romantic thought, she is also therefore implied to be closer to the source of poetry itself. क्योंकि वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए वो it could be a very good source of poetry. और वो जो रोमांटिसिज्म है वो इसी से ही, मतलब इसी सोच से ड्राइव किया गया है. So this was all about the theme and critical analysis of the poem, and I will discuss line to line explanation of the poem in my next lecture. So see you there.